हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक सिटीज। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस, ओके, ऑफ इकोनॉमिक नेचर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं जिसमें कि हम स्टडी करेंगे, ओनली रिकॉर्डिंग करेंगे इसको विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ओके, so only these kind of transactions are going to be recorded in the books of accounts. Okay, balance of payment, that is, okay, and किस चीज में हो रहा होगा? Between the residents of the country and rest of the world. Okay, and it should be what in a given period of time. So because of that, in given period of time का मतलब क्या है? यहाँ पे fiscal year हो गया. Fiscal year starts from 1st April to 31st March. So within this time period, all the transactions related to visible items, invisible items, capital transfers or unilateral transfers that comes under the category of economic transactions between the residents of a country and rest of the world are recorded. Okay, so वो स्टेटमेंट को जिस चीज में ये सब चीजें रिकॉर्ड होंगी उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, सो एंड इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि ये 1 ईयर के लिए ही 1 ईयर पूरा जो है लिया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए. ओके, टाइम ड्यूरेशन इज. Now, meaning of economic transactions, it refers to those transactions which involve the transfer of the title or ownership of goods, services, money, and assets. Okay, I hope it's clear now. Now we will see that what are the items that are included in visible items. So it includes only the items that can be seen or touched or measured, okay, and the goods which are exported and imported. यानी कि मेन हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं related to visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfer that are going to be recorded in balance of payment. Okay, now invisible items कौन कौन से हम choose करेंगे? That is including all the services like shipping, transaction, transportation, banking, insurance, which we either give or receive. Okay, and they cannot be seen, felt or touched and measured. Okay, then unilateral transfer, basically it includes, or you can say they are the one-sided transactions in which only either you receive or either you pay or give to someone. Like for example, gifts हमने किसी को दिए तो वो वन साइडेड हो गया, अगर रिसीव करें तो वो भी वन साइडेड है. पर्सनल रेमिटेंसेस, ओके, देन यू कैन से द डोनेशंस हैं. All these things are included in this unilateral transfer. They do not involve any claim for repayment and also known as unrequited transfers. Then capital transfers, it relate to capital receipts, okay, and capital payments, okay, between the residents of the country and rest of the world. Now, the structure of balance of payment. Now, here we have to study the structure of balance of payment. What we will do here, that is, first of all, as I've already told you, it is an economic, you can say the transactions are recorded, okay, in this, and it is follow the rules. That is a double entry. Okay, it follows double entry. That means it has the two impacts. कोई भी आप transaction करेंगे उसका एक दो impacts होंगे. Either you are giving or receiving, okay, or you are making the payment or receiving the money. ठीक है, तो ये कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, वी हैव टू मेक टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड, दैट इज द आउटफ्लो, तो इसलिए पैसा जा रहा है यहाँ से, हमारा सर्विसेज या पैसा कुछ ना कुछ गिव कर रहे होंगे, तो दैट इज द माइनस और नेगेटिव साइन हियर. एंड क्रेडिट आइटम्स, दैट इज द इनफ्लो, समथिंग वी आर रिसीविंग. ओके, सो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंपोर्ट करे हैं गुड, देन व्हाट हैपेंस हियर? वी गिव द मनी इन रिटर्न. in receive while receiving something we pay something also. Okay, तो क्या होगा? imports of goods हो गया, उसके बदले उन्हें पैसा पे किया तो इसलिए माइनस हो रहा है. ओके, देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड मीन्स हियर दैट इज वी आर exporting goods, so in return we are getting receiving money, so it is the inflow of money. Okay, then imports of services similarly here हमने क्या किया? किसी से सर्विसेज ले ली है तो उसके बदले में we have to make the payment, so पैसा उसमें भी आपका मनी आउटफ्लो कर रहा है. Exports of services, we are providing our services as banking, insurance and transportation to other countries, okay, to other people, to rest of the world, so there is a inflow. In return we are getting the money, so inflow of money. Then unilateral transfers to abroad, यानी कि हम किसी को दे रहे हैं, right, and unilateral transfers from abroad we are receiving. Okay, then income like rent and interest and paid to the are paid to abroad. Similarly, छोटे मोटे income या rent अगर हम pay करते हैं, then again the outflow of money. And income like rent and interest received from abroad, that is the inflow of money. Okay, so till here that was the structure of balance of payment. As we have already said, it follows double entry. हर चीज का दो impacts होंगे, या तो आप receive कर रहे होंगे money या आप दे रहे होंगे money, right? So
not credit and debit side I have already told you. Then बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, नाउ इसी में क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू हियर। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके, सो इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस, ये क्या है आपके विजिबल आइटम्स है। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी, ये आपके क्या है, इनविजिबल आइटम्स हो गए। ओके, जो सर्विसेज है आपकी, यही तो मैंने अभी आपको बताया था, दीज आर द इनविजिबल आइटम्स। ओके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की थी। दिस इज द थर्ड वन, यूनिलैटरल। ओके, जब हम इन सबको एड ऑन कर देंगे, फॉर एग्जांपल विजिबल एंड इनविजिबल एंड यूनिलैटरल। ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, तो इसका क्या बनता है, करंट अकाउंट। ओके, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका डेबिट और क्रेडिट साइड जो भी हम बैलेंस निकालेंगे, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। मींस करंट अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। ओके, एंड ये जो आपका है, ये जो नीचे वाला ये पोर्शन, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बस यही आपका मेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो पूरा स्ट्रक्चर ये बनाया है। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हेन एनीबडी आस्क यू अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, सो यू जस्ट हैव टू कंसिडर ओनली इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो ये पार्ट जो है आपका वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। So balance of trade means exports of goods minus imports of goods. Now it can be of two categories, for three categories. It can be balance of trade जो है आपकी situations क्या हो सकती हैं, it can be balance of trade can be, you can say surplus अभी आ सकता है। ओके, एंड आपका डेफिसिट भी आ सकता है। क्या कंडीशन होती है मैं भी आपको बता रही हूँ। एंड इट कैन बी, यू कैन से बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड बीओटी भी हो सकता है, डेफिसिट बीओटी भी हो सकता है, और सरप्लस बीओटी भी हो सकता है। इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ बीओटी के बारे में, राइट। सरप्लस कब होगा, सरप्लस में कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 6000 के हैं, और इंपोर्ट्स के लिए हम एम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो 4000 के हैं। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी कि ये आपका पॉजिटिव में बैलेंस आ रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ सरप्लस बीओटी, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड की बात कर रहे हैं खाली। ओके, ना फॉर एग्जांपल डेफिसिट कब आ सकता है, सपोज एक्सपोर्ट्स आपके 6000 के हैं और इंपोर्ट्स आपके ज्यादा हो गए 7000 फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या हुआ, माइनस में आ गया बैलेंस आपका 1000। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डेफिसिट। ये सेकंड मैंने आपको बता दिया। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड आपका कब होगा, ट्रेड वाला, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सिचुएशन व्हेन एक्सपोर्ट्स आर फॉर एग्जांपल 5000 एंड इंपोर्ट्स आर आल्सो 5000, तो ये क्या है आपका, बैलेंस्ड है, राइट। नील आ गया यहाँ पे वैल्यू, एंड दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड बीओटी। ओके, आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। ये तीन कंडीशंस आती हैं आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इट कैन बी बैलेंस्ड, इट कैन बी डेफिसिट, इट कैन बी सरप्लस। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझा दिया, राइट। ना बैलेंस ऑफ ट्रेड का हो गया। नाउ यू कैन जस्ट स्टडी हियर, और क्या रह गया है, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका, just let me rub this and then we are going to move to the other slide here, जिसमें आपका बताया जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका सरप्लस भी हो सकता है एंड आपका डेफिसिट एंड बैलेंस भी हो सकता है। ओके, तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या है, कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट लेट मी जस्ट डू दिस, दैट इज द आपका जो बचा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस, और उसकी कंडीशन मैं बता दूं। Let me rub this
and then move to the other slide. Okay, so balance of payment is always balanced like trial balance as it is prepared as per double entry system. ये आपका पूरा जो है आपका balance of payment है, right? Now, in economic sense, BOP needs not always be equal. It can be balanced BOP when receipts of foreign exchange are equal to balance of foreign exchange. Okay. Surplus कब होगा? When receipts are more, receipts ज़्यादा कर रहे हैं and payments आप कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो surplus आ जाएगा. Deficit when receipts are less than payments. Okay. तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जो मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया वो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का. रिमेंबर दैट विजिबल आइटम्स के बारे में बताया वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड. उसका यहाँ पे देखिए लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड. इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और यू कैन से ट्रेड बैलेंस. इट refers to a difference between the amount of exports and imports of visible items, that is the goods. So this is the formula and important points. Exports are entered as credit. Okay, exports देखिए credit side पे है, plus side पे है, right? And imports are on the debit side. Imports देखिए यहाँ पे debit side पे because the outflow जा रहा है money का, right? Then BOT is just a part of balance of payment. Now this is the whole structure of balance of payment, right? और BOT क्या है? ये आपका पार्ट है खाली. ये जो फर्स्ट आपकी लाइन है imports of goods and exports of goods, it is only a very small concept of balance of payment. ये BOT क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, राइट? पार्ट है इसका. So it plays crucial role in deciding the overall situation of the balance of payment of the country. Okay, it helps a lot, but still it is a very small or you can say small concept in relation to what balance of payment. उसका वो part है balance of trade. Okay, with this we come to the end, and the next video we are going to start the components of balance of payment. That is the theory part, and then the capital and